बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागलाई। मैं हूं आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में बात करेंगे टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। डियर स्टूडेंट्स, आप टार्क के मुतालिक ऑलरेडी वेक्टर्स के चैप्टर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि टार्क जो है इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट ऑफ। हम आज न्यूटन सेकेंड लॉ को इन एंगुलर फॉर्म लिखेंगे। और सबसे पहले मैं टॉपिक लिख दूँ, दैट इज टॉर्क and moment of inertia। डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और इसका टार्क के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये भी आज अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एंगुलर मोशंस में यूज़ होती है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसको डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। तो जिस तरह मास की डिफिनीशन हम कहते हैं ना कि किसी बॉडी के अंदर जो है मास की वजह से एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक वो जो है अपने स्टेट को मेंटेन रखे। अगर मास है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने स्टेट को मेंटेन करे, स्टेट ऑफ मोशन को, कि वेदर वो रेस्ट पर है या मोशन में है, तो वो उसी अपने स्टेट को मेंटेन रखने के लिए एक एफर्ट करेगा। उस में ये एबिलिटी कब आती है, जब उसके पास मास आता है। सो मास इज एक्चुअली द इनर्शिया। और न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and the body in motion will remain in motion along straight line until and unless some force is applied। so वो जो अपने स्टेट को मेंटेन रखने की जो एबिलिटी है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो लीनियर केस में ये मास होता है और अगर रोटेशन की बात होती है तो उसके लिए फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करते हैं, इसको रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया मैथमेटिकली जो है इस तरह इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। मास की भी प्रोपोर्शनल है, जाहिर है ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसको घुमाना मुश्किल होगा, या अगर घूम रहा है तो उसको रोकना मुश्किल होगा। इस तरह का सेंस बनाएं। जिस तरह मास के केस में मास ज़्यादा हो लीनियर केस में तो उसको एक्सेलरेट करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट व्हेन मास इज स्मॉल। जिसका मास कम हो तो उसको फिर आसानी से एक्सेलरेट किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको मुश्किल से घुमाया जा सकेगा और जिसका इनर्शिया कम होगा सो इट वुड बी ईजियर टू रोटेट दैट सिस्टम। नाउ द इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास and it is linearly related to mass and it is proportional to the square of the separation between the axis of rotation and the mass। मास उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर दूर स्प्रेड है इस पे डिपेंड करता है इनर्शिया। अगर मैं इसको एक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी k टाइम्स m r square and this k is some constant, it is a number, it is a fraction and this value of k the value of k depends upon the geometry
ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम रोटेट करना चाहते हैं या जो रोटेट कर रहा है उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखें, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए के की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिंग के लिए, और के की वैल्यू जो है वो 1 है। तो फिर इस तरह आपको डिस्क नज़र आ रहा है, स्फीयर है। तो ये टेबल आप फिर देख लें। मैं यहाँ पर उन सारी वैल्यूज़ को एक एक करके लिखता हूँ कि किन किन चीज़ों के लिए के की वैल्यू क्या है। सबसे पहले मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करूँगा जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, सर्कुलरली मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मास है, पूरे का पूरा किसी पॉइंट के गिर्द घूम रहा है। उसके लिए फॉर एन ऑब्जेक्ट सर्कुलेटिंग a point making circular path of radius r, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है, सर्कुलेट करता है, ये वो ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट के गिर्द सर्कुलेट कर रहा है along a सर्कुलर पाथ। अब इस ऑब्जेक्ट का रोटेशनल इनर्शिया या इनर्शिया क्या होगा जब यह पॉइंट एक्सटर्नल किसी पॉइंट के गिर्द घूम रहा है? तो की वैल्यू हमेशा 1 पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है ये चूंकि r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका मास m है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा? mr²। k is 1 for this system, k is 1। And this is not the only case where k is 1. If the mass is such that it is distributed along the circle and it is away from some axle, you can take example of a ring. You may call it a ring. You may call it a thin-walled cylinder, a pipe with thin walls, and it may be anything like this. It may be hoop, it may be ring, it may be anything. So for all these cases where mass is distributed in such a way that most of the mass is along the circle and very negligible mass is here inside that ring, so in that case the radius of that ring is r, the mass of the entire ring is m, and its inertia is I equals mr². The same is for this case. And in some sense it is also making a ring if you assume it just for the sake of some analogy to remember. तो ये है कि इस तरह की सिचुएशन होगी अगर रिंग होगा। फिर मैं इसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। उसी मटेरियल को जिससे मैंने ये रिंग बनाया है उससे मैं एक डिस्क बना लेता हूँ, इसको मोल्ड करके उसमें दोबारा एक डिस्क बना लेता हूँ।
it's like a plate you use at home. And this time the mass is distributed throughout that disk. And now if I rotate this disk about its center of mass, well, generally we assume the center of mass to be its center, and I am assuming the case is where the mass is uniformly distributed, and then in such case the radius of that disk is r. The inertia is 1 by 2 mr square. M is the mass of that disk, and r is its radius, and its inertia is half mr square. And then if I change it a bit, and I make some space here, and now it's neither a ring nor a disk, as we discussed first. So in this case there is another circle of radius small r, and if I assume its radius to be large r, there are two circles and the mass is in between those circles. And in that case what we do, we change the situation to small r square plus large r square. Situations become like this. So if I change this further, it's a disk, but it is empty from here, and now it is not the thin walled cylinder, it is some cylinder with the very thick walls. So in that case you can use this relation. And then if I make a cylinder, and that cylinder is empty, so we already discussed that. And if it is a rigid cylinder, then it is a disk, because a coin, it's a coin, and if I place coins one above other, so I get a cylinder. So its relation is once again for inertia is 1 by 2 mr square. Here once again k is 1 by 2 if the cylinder is filled from inside. It's a solid cylinder. If but it is a thin walled hollow cylinder, then it is like the ring. And then if I take the situation of the distribution of mass such that the mass makes some sphere. If it is a sphere, and if I make a ball of that mass which I have, the same mass m, but now this time I am making some ball of that mass, and that ball is filled from inside. It is a solid ball, and it's a solid sphere, and in this case inertia would be 2 by 5 mr square. Here k is 2 by 5. And if it is shell, if it is empty from inside and it is not a solid sphere, then if it is empty shell, thin walled, then you can use k equals 2 by 3, and
you get inertia, that is equal to 2 by 3 mr square. So this is how we can express inertia of different geometrical shapes. And then I move to some case when the mass is randomly distributed. It is not a uniform distribution of mass. Then for that I have to remove this. I should remove this too, but I am not going to remove this, and there is a reason behind this, because now for an irregular object having mass m like this, and if I want to rotate it about some axis that pass through its center of mass, and this is the case. Okay. How we then express its moment of inertia? यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे पेचेस बना लेते हैं इस मास के। और मैंने उनमें से कुछ चूज किए, और वो सारे, अगर इसको मैं m1 कह दूं तो उसका मोमेंट आर्म r1 है, इसको मैं m2 कह दूं तो उसका मोमेंट आर्म r2 है, इसका मोमेंट आर्म r3 है, इसका r4 है, ये खुद m4 है, और इसको मैं कोई nth पार्ट ऑफ दैट distribution mn, and its position vector is rn. And now if I consider the rotation such that all these objects rotate with the same angular velocity, and they would definitely move with the same angular velocity, that is because they are part of a single rigid body, and the distance between them is fixed, and they only can rotate with the same angular velocity. So in that case its inertia would be total inertia. If I talk about the total inertia, the sum of all the inertias of those components, and among them one is m1 r1 square, m2 r2 square, dash 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 mn rn square. And why I have chosen k equal to 1 for that case? Because I am assuming those tiny small portion of mass is this mass, and they are moving about around some external point. With respect to them it is some external point, and then I can use this expression, and the total inertia of that rigid body would then be summation of all those mi ri square, and I equals 1, and it may reach to n for the entire body. So this way we calculate the rotational inertia, the inertia of that irregular body. So inertia is really very important. That is because it provides that ability to the object to withstand against any attempt to change in its state of motion. If we want to accelerate an object, its mass would withstand this attempt. Its mass would not like to be accelerated.
And in the same way, if we want to rotate an object or we angularly accelerate an object, it would always tend to oppose this acceleration, and the ability in them is because of their inertia. There is another case of rotating a rod about some other point other than this rotation. We can also rotate a rod like this. So for that case, I just forgot to mention it. So here is some cell rod, and this time I want to rotate about some axis that pass through its center of mass in this direction, and in this way we use inertia. Formula for inertia is 1 by 12 mr square, ml square, sorry, L is the length of that object. So after this हम बात करेंगे टॉर्क की, इनर्शिया को टॉर्क के साथ रिलेट करेंगे, और आप ये जान जाएंगे कि इनर्शिया जो है टॉर्क के साथ उस तरह रिलेटेड है जिस तरह मास और फोर्स रिलेटेड है। हम न्यूटन सेकेंड लॉ को इन एंगुलर फॉर्म लिख सकेंगे अगर हम एक दफ़ा इनर्शिया और टॉर्क को रिलेट कर सके, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकें। सो you know the definition of torque from chapter number 3, vectors and equilibrium, or chapter number 2 it was. So torque is the cross product of movement arm and force, and this force is such that it attempts to rotate an object about some radius, about some central point having the position vector r. So about some central point, and if I take an example of a wheel, it's a wheel of motorcycle or cycle or anything you can take. Well, and if I apply some force on this wheel in this direction, and it has some radius, and that is in this direction, and I want to rotate this. Here is the force. Here is R, and now where is the torque? So from right hand screw rule or screw rule we can give direction to torque. Torque is in this direction, out of that region. But what is F? F can be, from Newton's second law, expressed in terms of mass and acceleration, and if I assume this motion to be uniform and I only talk about the magnitude of that torque, so it is R. F sine 90 is 1, do not need to write it. So one step for you. N is perpendicular to the force, N is perpendicular to the radius, both are vectors.
and the direction of torque is perpendicular to both, and this is all you need to know. Now I only take the magnitude of that torque, and I assume the motion to be uniform, and I assume this angle to be 90 degree, and this way I get 1 from sine theta, and I am left with this simple expression. And then if I call it equation 1, I can express F in terms of mass and acceleration, Newton's second law, you already know. And this acceleration is in this direction, so acceleration is tangential acceleration, it is not some centripetal acceleration. So it is tangential acceleration, and we already discussed that the tangential acceleration is related to the angular acceleration by the expression R alpha. This time I am talking about the magnitudes only, so I am not bothering writing arrowhead or above all those vectors. So A is R alpha, and if I substitute this value, put 3 into, and you are having this expression, F equals mR alpha. And now if I substitute equation 4 in equation 1, I get tau equals R times MRA, so R times MR alpha, sorry, not A, MR alpha, and what we get is torque equals MR square alpha. And we discussed already that MR square is inertia and it is a ring, so I can easily write that I alpha, Q I alpha, that is because I equals MR square. And here you see, and if you want to express this in vector form, you can express it this way, I alpha. So the direction of alpha is axial, the direction of torque is axial, you already know. So this is how we can express Newton's second law in angular form. Newton's second law in angular form. And we already discussed that F is equal to ma. Every parameter of linear motion has its analog in angular motion. So it's torque, it's inertia, it's alpha. So F is equal to ma, tau is equal to I alpha. This is Newton's second law in angular form. और आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरमियान रिलेशनशिप की। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा ताला पामान।